Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to day 6 of our this journey, a quick study of. So, we will continue from, we will start today 2.5, 2.56. The first point, if the front edge of a scaffold platform is less than 360 mm 14 inch from the face of the wall or structure, guardrails. स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है सर। स्क्रीन डिस्कनेक्टेड है, शेयर दिखा रहा है जी। अभी आया? हाँ अभी आ रहा है सर। चले ठीक। जी सर आ गया। यस सर राइट। चले ठीक हो गया। So, if the front edge of a scaffold platform is less than 360 mm 14 inch from the face of the wall or structure, guardrails do not need to be erected along the edge. ये हमने कल भी पढ़ा था, इसको यही पॉइंट हमने कल भी देखा था. However, falling object protection shall be provided, covering the gap with planks or by using toe boards, nets, barricades, etc. as described in section 255. So we have talked about section 255 previously. So we'll just go to, okay. This is what we can put the planks. When we are saying put planks, this is what we can do. You can see here the first, in this picture, we have a plank with tube and coupler. The second one using system scaffold using a hookup bracket. This is what we refer to hookup bracket. So this is what we can do in case of a gap between wall and the scaffold platform. Scaffold platform shall be closely planked or decked as fully as possible between the guardrails. Exception, the requirement to provide full plank or decking does not apply to platform and walkways currently being erected or used solely by the workmen performing scaffold erection or dismantling. So यहाँ हमारे पास condition ये है जी कि it says that they should be fully planked, fully decked. But if the scaffolders are erecting scaffold at that time during erection, there can be a gap. There can be gap between planks. It's not that they will keep it, but definitely it's a job requirement. They are putting, they are adjusting. So at that time it is acceptable. Again, 256, we have for medium duty and more heavy load scaffold, at least one board barrier intermediate transom shall be used in every bay at each platform level that is constructed using a solid saw wood plank. Similarly, it says for the point D, the maximum span for solid saw wood plank and LVL planks with an actual thickness of 38 mm, 1.5 inch to 42 mm, 1 over 1/5, 5/8 of an inch shall not exceed 1.5 meter, 5 feet. For which one? For solid wood or LVL plank of thickness 38 mm and 42 mm. Figure 2.21, we are going to look at it. Longer spans allowed by the manufacturer of LVL plank, for example, 1.8 meter, shall be in accordance with the section 242, 243, and may be used if the same manufacturer identification mark is clearly visible on each plank. However, the span shall not exceed 1.5 meter, 5 feet for planks used in wet applications. So if the
requirements of 243 are acceptable, or they are complied with, then we can use the scaffold plank with 1.8 meter. But even if they are matching, they are fulfilling the requirement, and we are in offshore wet application where moisture is, it will apply also near to any steam producing equipment or so on. So in that case, maximum span will be 1.5 meter. This is what we talked about 243 previously. They are giving us the specification for the planks as well as specification the stamp marking of the planks. So this is 221. So this is what we refer to intermediate transom. Let me have the pen. Okay. This is our intermediate transom. Transom and intermediate transom, or in other word, barrier on and board barrier. From the bearing, we will say. So barrier and intermediate board barrier or intermediate transom. Maximum span 1.5 meter, then we have to put another one. We can put it in between center means also, but the maximum length should not go beyond this. For solid saw board or for LVL planks. The thickness they have mentioned 32 or 42 mm. Again, there is room for going beyond that if all criteria for the planks are completed. And when the all criteria are completed, that is the only condition when we are using or when we can use. If the criteria is not fulfilled, then definitely we cannot use planks. Any question? No, sir. Okay. Moving further, the maximum span for solid saw wood planks and LVL planks with an actual thickness of 50 mm, 2 inches or more shall not exceed 2.48 feet of the span. Okay. So now either solid saw wood or wooden or the LVL plank, if it is 50 mm, the span will not go beyond 8 feet. But there is a limitation again. Longer span allowed by the manufacturer LVL plank shall be in accordance with section 243 and may be used if the same manufacturer's identification mark is clearly visible on each plank. Okay, again, the same thing. If the manufacturer allows, however, the span shall not exceed 1.5 meter, 5 feet for planks used in wet application. Wet application again for the offshore or near to any steam generation or such. Okay. Now we'll go further with the picture. Same it is. Just reference for the 8 feet. That maximum it can be 8 feet. And thickness of the plank is 50 mm, 2 inches. 50 mm, 8 feet maximum span, and 42 or 38 mm, the span will be 5 feet. Okay, the next point we have planks shall be secured at both ends to prevent vertical and horizontal movement by using fiber rope or wire lash, clamp boards or other equivalent means. तो मल्टी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं. तो अगर यही ऑप्शन हमारे पास उसके लिए है, वायर के लिए है, तो हम वायर यूज कर सकते हैं 6 mm, बल्कि इससे भी छोटी वायर होगी. 6 mm तो बड़ी हो जाती है.
1.8 की है, if I'm not forgetting. I will recheck and share with you. वायर रोप और उसके ऊपर वो कोटेड एक होती है, जैसे ये रीबार की होती है ना, ये भी यूज की जाती है कोटेड सी, वो यूज कर लेते हैं। फाइबर की कोई रोप हो वो यूज कर सकते हैं, या फिर अगर क्लैंप लगा हो तो वो भी है, क्लैंप बेहतर भी रहता है। ये हम देख सकते हैं, ये इसका मतलब है लैशिंग का। ये हमने लैश कर दिया, लैश अलाउ है। जो स्टील वायर होती है, जो रीबार वाले यूज करते हैं ना, स्टील वायर ग्रीन सी कलर में उसकी वो कोटिंग होती है, वो एक्सेप्टेबल है, वो यूज हो सकती है। तो हम इस तरह से कुछ इसको लैश करते हैं, फिर ये नीचे जाएगी, फिर इसके ऊपर, फिर अगले के नीचे, फिर इसके साथ ट्रांसम के साथ, और फिर आगे, ताकि बोर्ड जो है वो हिले ना। या फिर हम जो क्लैंप हमने पहले भी देखा था, वो क्लैंप यूज कर सकते हैं। सर इधर ये क्लैंप के मुतबादल यूज किया है इसने। जी ये इधर क्लम्प या ये वायर दोनों में से कोई भी यूज करें। हाँ, कोई भी एक चीज यूज कर लें आप, कोई भी एक चीज यूज कर लें। तो यहाँ पे इन्होंने वायर यूज की हुई है, एक्सेप्टेबल है। वायर है स्टील वायर, वो सरिये वालों की जो नहीं होती, वो कवर्ड वन। या फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, फाइबर की, वो भी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट देखते यानी हैं सर ये। कहीं भी, जी यानी जो आप बताए हैं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइम नहीं लगा के अगर बंदा अगर ये वायर से वो कर रहा है तो कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, इशू नहीं, ऑब्जर्वेशन एक्सीडेंट? नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं नहीं है नहीं, ये। एक्सीडेंट। लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्लेम की जगह लेशिंग हो सकती है। स्टैंडर्ड कह रहा ना, खुद मैनुअल कह रहा है फाइबर रोप और वायर लेशिंग, तो आप इसको वायर लेशिंग कर सकते हैं। वायर लेशिंग ओके जो है सर। वो बिल्कुल अलाउ है। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं जी। एंड ऑफ length shall extend beyond the central line of their end support barriers transoms by at least 150 mm 6 inches, unless collated or otherwise restrained by equivalent means. 2.24। तो एंड ऑफ लेंथ ये हमारे पास पिक्चर इसकी चले आएगी, हम देखते हैं अभी। एंड ऑफ लेंथ shall not extend more than 300 mm 12 inches beyond the central line of their end support barrier transom। तो दो हमारे पास इसमें चीजें आगे हम देखते हैं। एंड ऑफ लेंथ shall extend, एटलीस्ट कितना एक्सटेंड होगा जी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ देयर एंड सपोर्ट बैरियर या ट्रांसम जो है, जो याद रखिएगा, ये जो फिर हमारा आ जाएगा ना इसके साथ, जो हमारा आ जाएगा ये पोल के साथ, स्टैंडर्ड या इसको क्या कहेंगे, पोस्ट के साथ, वो हम ट्रांसम या बैरियर हो जाएगा, और जो हट के आएगा वो इंटरमीडिएट ट्रांसम या इंटरमीडिएट बैरियर आ जाएगा। चलिए, इसके सेंटर से 12 इंच मैक्सिमम जो है वो जा सकता है आगे। और एटलीस्ट कितना जाएगा, 6 इंचेस 150 mm। 6 इंच कम से कम होना चाहिए, ताकि डिफ्लेक्शन भी होती है ना, लोड आता है तो, जो हमने कहा था 1/60 ऑफ स्पेन से ज्यादा ना हो, दैट डिफ्लेक्शन। एंड डेफिनेटली वी हैव टू कीप मार्जिन, अगर इनकेस ज्यादा भी हो जाती है, तो ये हमारे पास जो है वो एटलीस्ट 6 इंचेस आगे होगा, और मैक्सिमम जो है ये 12 इंच से ज्यादा आगे नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ जी। ये देखिए, ये सेंटर है ना ट्रांसम का, इससे आगे बोर्ड जो है वो कम से कम 6 इंच निकला होगा एटलीस्ट, और मैक्सिमम 12 इंच। ठीक है जी, ये एटलीस्ट रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी होगी। ओके सर।
अगला पॉइंट देखते हैं, ये प्लैंक ओवरलैप शेल अकर ओनली अवर सपोर्ट्स। तो इसकी मैं कुछ देखूंगा तस्वीरें, ऑब्जर्वेशन वाली भी हम किसी वक्त इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। Plank overlap shall occur only our supports, that is barrier or board barrier. Plank slab length shall not be less than 300 mm 12 inches. Plank shall not be nailed together. 244 दोबारा हमने देखनी होगी। एक लाइन और देख लेते हैं। Planks shall be laid flush side by side to each other on all scaffold platforms and stair landings. Means curvy नहीं होंगे, they should not make any curve or hump. फ्लैट एक दूसरे के साथ फ्लश टू ईच अदर जो है वो लेवल में आएंगे। और दूसरा पॉइंट कि एटलीस्ट 12 mm ये ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग, ये 6 इंच बियॉन्ड चला गया जो हमारी एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है, और ये ऊपर वाला जो है वो 6 इंच बियॉन्ड द ट्रांसम सपोर्ट चला गया। ये हमारी जनरल रिक्वायरमेंट पूरी होगी एंड शुड बी ओवर द क्या कहते हैं सपोर्ट। तो ये दोनों अब सपोर्ट के ऊपर है। और ये प्लैंक टू प्लैंक जो ओवरलैपिंग है, एक प्लैंक दूसरे के ऊपर आ रहा है, वो एटलीस्ट 12 इंच की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो सपोर्ट के ऊपर भी है प्लैंक, और 12 इंच एक दूसरे के ऊपर भी है, और सेंटर ऑफ द बोर्ड बैरियर जो है इंटरमीडिएट ट्रांसम जो है उससे 6-6 इंच दोनों, ये भी 6 इंच उधर गया हुआ है, ये भी 6 इंच इधर गया हुआ। ये स्टेट, ये आई सेक्शन की ये डिस्क्रिप्शन। और नेलिंग नहीं कर सकते हम। अब ऐसी सूरत में फिर हमें लेशिंग ही आएगी। ऐसी सूरत में हम नीचे वाले को तो क्लैंप लगा देंगे, ऊपर वाले का क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में फिर हम लेशिंग कर सकते हैं। या अगर ये बिल्कुल फिक्स आ जाते हैं, एक पोस्ट से ट्रांसवर्स में पोस्ट टू पोस्ट के सेंटर में फिक्स आ जाते हैं, फिर भी ठीक है। अगर फिक्स नहीं आते तो फिर हम लेशिंग कर देंगे। So in such situation, definitely we have to lash. Otherwise, clamp will not fix. If they are stuck between two transoms, between two posts in transverse, they cannot move. Well and good. Otherwise, we have to lash them. Further, K on platform where scaffold planks are placed end to end, each end shall be independently supported. Okay, exception, this provision does not preclude use of common support members such as T-section to support building planks or hook on fabricated metal planks designed to rest on a common support. Okay, so when इसकी पिक्चर में नहीं ला सका, अगर इसको मैं यूं दिखा दूं कि ये एक प्लैंक है, इसके आगे हमने दूसरा प्लैंक डालना है। यहाँ पे अगर हमने दूसरा प्लैंक डालना है, ठीक है जी, एंड टू एंड, ऐसी सूरत में क्या होगा? सेम 6 inches at least or maximum 12 inches. So we will prefer 6 here because in the 12 the load will be on the plank. We will prefer less than 12. So again 6 inches, and here 6 inches. We will put another transom. So two transoms will be here. One will bear the load of this plank, and the one will bear the load of this plank. तो आमने सामने जो face to face end to end आ जाएंगे, उसका ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट कैसे होगा? ये जैसे अब है प्लैंक, इसके आगे दूसरा डालना है तो एक सपोर्ट इसके नीचे आ गई, वही हम प्रेफर करेंगे 6 इंच हो, 6 से ज्यादा ना हो। और दूसरा हम ये इसको यहाँ पे ले लेते हैं। इसके लिए एक और सिस्टम भी चलता है मोस्टली जो इरेक्शन करते हैं, यहाँ पे नीचे एक बोर्ड भी डाल देते हैं, ट्रांसम टू ट्रांसम, ये लेजर टू लेजर एक बोर्ड डाल देते हैं अमूमन। उसमें ये होता है कि थोड़ी बहुत जो कंपनसेशन आ जाती है, हल्का फुल्का जो उस पर लोड भी आता है, तो नीचे हल्का सा वो नीचे अगर होगा भी तो नीचे दूसरा बोर्ड उसको सपोर्ट करेगा। और फिर दूसरा जो वेरिएशन आती है, एंड टू एंड जो वेरिएशन आती है, प्लैंक कोई थोड़ा बहुत एक आध इंच शार्ट वगैरह होता है, वो नीचे से कवर हो जाता है। ऊपर तो डेफिनेटली वो ट्रिपिंग हजर्ड रहता है, लेकिन नीचे से वो नजर नहीं आता, कवर हो जाता है। तो ये भी एक टेक्निक यूज होती है। So have to clear it first.
Okay. So up to here, each shall be supported on independent support, exception for the hookup and T section. तो ये हमारा T ट्रांसफॉर्म है जी, कॉमन ट्रांसफॉर्म. सो व्हाट गोस हियर कि एक प्लैंक इस तरफ आ जाता है और एक प्लैंक इस तरफ आ जाता है. ठीक है? ये हमारा टी हुक कह लें या आप इसको टी ट्रांसफॉर्म कह लें. सो second thing, this is what we refer to hook on fabricated metal plank. It can be wooden, but again, the wooden will have the outer frame of metal. So in this case, this is metal hookup. So these hookup are designed in a way that if on the transom one is in this direction, the other will be able to fix here. So here the hook will come and the next hook will come here. So their both side hooks are bit different. For example, they're displaced from each other. One is here, the other hook will be here. If it is here, the other will be here or here. तो ये हुकअप जो हमारा बोर्ड होगा फैब्रिकेटेड प्लेन, उसकी दोनों तरफ की हुक जो है वो एक दूसरे से थोड़ी हटके होती है. अब जो इस तरफ प्लैंक डालेगा उसकी हुक इधर या इस तरफ आ जाएगी. तो ये सिंगल सपोर्टिंग मेंबर पे दोनों खड़े हो जाएंगे. Here you can see the one in use. कौन सा है जी ये हमारे पास? Let me magnify it. So you can see here it's a T section transom or T transom. Although it's not up to full length, but to compensate this section. Hopefully it's clear to you. So now in this way they have given a gap. Otherwise, once gap is not required, further will be plank will be continued. Clear ji? यस सर. Clear, sir. Okay. Next, let us move further. Okay. Further L at all points of a scaffold where the planks change direction, such as turning a corner, and planks that rest on a barrier transom at an angle other than right angle. Okay. So other than right angle shall be laid first, and the planks which rest at right angle over the same barrier transom shall be laid second on top of the first one. अभी इसमें ये हमारे पास आ गई पिक्चर. अब ये हमारी इनवर्स पिक्चर कह लें आप इसको. इट्स नॉट व्हाट exactly the statement describes. So this one is now at 90 degree. Okay, because the transom is here, this is at 90 degree to transom. Again, this one at 90 degree to transom because transom is here. Now this is the one which is other than at 90 degrees. So in this case, these two boards, those they are up, the smaller boards, they are supposed to be laid first. They are supposed to be laid first, and then above them, the right angle board will be. तो ये इसमें कह रहा है जी कि जब अदर देन 90 डिग्री पे जो प्लैंक आएगा वो पहले आएगा. जैसे आप देखें स्ट्रेट आ रही है इसका फोल्ड, यहाँ से भी स्ट्रेट आ रही है, एक सेक्शन मतलब एक डिग्री लेके चल रहा है, स्ट्रेट जा रहा है. तो जो स्ट्रेट वाला है वो अबव होगा, जो एंगुलर पड़ेगा जैसे ये अब एंगुलर है अदर देन 90 डिग्री है तो फर्स्ट वी हैव टू ले देम देन द अदर विल कम अप अबव. ये इनवर्स पिक्चर है हमारे पास. इसी तरह एक और पिक्चर भी है दैट इज आल्सो इनवर्स. Like here, this board is straight on the transom. Bismillah. Transom. This is straight on the transom. So it is supposed to be above the blue one. Here as well. This is straight. The other section have to be lower and this one to upper. ठीक है जी, क्लियर हुआ जी. यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि ये जो स्ट्रेट आ रहा है वो नीचे होगा
और ये मैंने बहुत अपना वो क्या कहते हैं, जीआई क्या क्या बोलते हैं जी इसको, एआई, बड़ी उसकी मैंने समाजित की, ये ब्लू बोर्ड मुझे नीचे कर दो। लेकिन डेफिनेटली these things they have limitations also. So, and worse I am explaining it. Okay, moving further. Each platform unit, scaffold plank, fabricated deck, or fabricated platform shall be installed so that gaps between platform unit are less than 2.25 mm, that is 1 inch. Uh, Tension have to be blocked. Okay. So any gap between plank can be up to maximum 1 inch. When a larger gap is unavoidable, it should be covered as follows. यानी लार्जर गैप किस तरह होता है हमारे पास, जब हमारी ट्रांसवर्स में ज्यादा जा रही होती है बर्ड केज का फोल्ड, तो जो सेंट्रल पोस्ट आ रही होती है हमारे पास, वो डेफिनेटली हमें गैप दे रही होती है, और पाइप हमें पता है कि ऑलमोस्ट 2 इंच का है, तो फिर वो गैप 1 इंच से ज्यादा हो जाता है। याद रखिएगा 1 इंच अलाउ है, इट डज नॉट मीन दैट इट मस्ट हैव, जस्ट वेरिएशन, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट, उसके लिए 1 इंच एक्सेप्टेबल हो सकता है, 12 होना नहीं चाहिए। Gaps more than 25 mm 1 inch wide but less than 50 mm 2 inch wide. The gap between plank caused by the inside vertical post standard passing through the platform shall be covered with properly secured plywood strips or equivalent. For example, unique scuff gap plastic strips. Whenever there is a potential for objects falling through these gaps and striking personnel or equipment below. So if this 2 inch gap, the one which is more than 1 and less than 2, if it cause any chance of material fall, I mean which could strike anyone down side, that should be covered. Covered with what? Plywood strips we can put between the gaps. Sometime hopefully you have seen people, they put the pipe, another pipe between the planks. So, okay, it can cover, but definitely we have to consider that pipe is smoother and little humpy, so it can cause a slip. This is what we are talking about. So, a firmly designed, that's a cover. Like here we can see the post is, so now this post gap, definitely it's a gap equivalent to 2 inches. So here we are covering. So here in the center we are covering. So this type of thing they can be fixed easily. But again, we will not nail them. कील इनको हम नहीं मारेंगे, क्योंकि वुडन बोर्ड में कील अलाउ नहीं है, इसमें स्कैफोल्ड बोर्ड में। Gaps more than 50 mm 2 inches wide but less than 600 mm 2 feet wide, less than 600 mm, refer to 2 feet wide, shall be covered with it at least 20 mm 3 by 4 inch thick exterior grade ply sheets. ठीक है जी, जो फिर 2 इंच से ज्यादा का गैप होगा उसके लिए हम आधी इंच की प्लाई यूज करेंगे, एक्सटीरियर ग्रेड की प्लाई, विच कैन बी एक्सपोज टू वेदर। इन हाउस नहीं कि जिसको मॉइस्चर लगी, पानी लगा, फौरन खराब हो गई, नहीं, एक्सटीरियर which will sustain the heat as well as rain or moisture, and 20 mm or 3 by 4 of an inch the size should be. Such ply covers shall be overlapped. Now we are not nailing them, and ply is still 20 mm less than an inch, and boards are at least 1.5 inch. So definitely there will be a lower level of more than half inch.
So therefore, we are not going to put them below in the gap on the transoms. We will put them over the planks. And when we are putting them over the planks, both sides, the gap have to be, the ply are to be overlapped 12 inches at both sides. So in a sense, if we have one plank, we have another plank. So when it's come to cover this area with plywood of 20 mm, exterior grade, 12-inch from here to here. So we will put it here. So this ply will have 12 inches here overlap, 12 inches, Bismillah, 12 inches overlap here. Okay. This overlap. At least on both sides. अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये गैप्स लार्जर देन 600 mm 2 feet in width shall be covered with properly secured, not nailed cross planks. Again, how we are going to secure? Lashing is the best option. Okay, we can do the lashing, so they will be secured. So cross plank, hopefully you got it, that if the gap is more than 2 feet, horizontal direction, what we call transverse, the gap have to be packed or covered. Clear है जी? जी सर जी। यस सर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते हैं. Next we have कि endpoint platform shall be kept free of obstructions, unnecessary material, projecting nails and other unnecessary tripping hazards. So proper working surface they are supposed to be. Adequate space for worker to safely pass shall be provided and maintained wherever materials are placed on the scaffold. If you are going to put material, which we do not prefer, but at least requirement to fulfill, whatever material we will place on the platform, after that, the clear access should be there for the people. And we know that at least access is 3 planks, 27 inches. So other obstructions, housekeeping, so on. Especially when the platforms are erected, they have to be thoroughly inspected before general use, because sometimes construction material claims, so on, they are forgotten there. So they have to be cleared before handed over to construction to work on them. Platform units that have become slippery with oil, sand, or any other substance shall be cleaned or otherwise removed and replaced prior to continuing use. In case अगर ग्रीस वगैरह लग जाती है, ऑयल लग जाता है, इस तरह का कोई और मटेरियल लग जाता है किसी लेडर पे we have more chances, or on any plank, so we have to make sure they are replaced, cleaned or replaced. Scaffold platform and landing shall be level. Okay, smooth they should be. Walkways are ramps, for example, connecting scaffold platforms. In some cases, they can be one platform to another platform, permanent to scaffold, from ground to scaffold, shall not exceed a slope of 1 vertical to 3 horizontal. As for the latter, we have 1 into 4. Here we have 1 into 3. So if we have one section, 3 sections of them, okay, this will be the slope. Okay. Walkways are ramps steeper than 1 vertical or 8 horizontal shall be equipped with clits. 1 vertical and 8 horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let us say this is 8.
it is supposed to be little less steeper than this. Steps that are then steps. Okay, ram steps. Ram steeper. Bismillah. Steeper than 1 vertical to 8 horizontal shall be equipped with clits. See sub chapter 4. Again, working surfaces. It comes in, but this is 3 into 1. So we cannot go beyond that. I think it will be approximately 54 something. Anyhow, but when they are more than 8 to 1 vertical, definitely they are less than this, way less than this. But after 8 to 1, we have to provide clits, some sort of clits. Okay. Normal, not like they are visible here, so they will give a foot grip, will not cause any slip. Temporary working surfaces of the manual of this manual for addition. Okay, refer to the 2-4 for this manual of addition requirement for working and trams. We will see if we can. With the next unit, we will try to attach because we will talk here on the ladder. So hopefully we will be able to cover this chapter as well in our next month, inshallah. So this is something we are not talking about. Really steep. Just an example. It's really steep. We are not talking about that. So something reasonable, where a person can go. This can be. It seems like it is even less than 1 hour at 1:8 ratio. Scaffold platform landing and walkways shall be at least 27 inches, 675 mm, or 3 planks. Normal plank we know is at least 9 inches. So 9 into 3 in 27. Wide including during scaffold erection. This is a valid point or a point to be noted, including during scaffold erection. So just an ignorance, sometimes people they accept 2 planks, some standard they allow 2 planks. But sometimes people cross the limit, they are just using 1. No. 1 should not be at any case. 1 should not be at any case. But again, wherever, I'm not saying for Aramco, other projects. Because as per Aramco standard, definitely we have to maintain 3 planks. So 1 is extremely not, yes, in some 2 planks are acceptable, we'll use them. For Aramco, any excess, at least of 3 planks, including during scaffold erection, dismantling or alteration. Okay, this is what example we have, at least 3 planks. You can see they are hooked up and they have a minor gap between them. They have a minor gap, still is acceptable. Okay. Precautions such as covering planks with fire retardant blankets shall be taken to prevent wooden planks from coming into contact with welding slag or open flames. Whenever a scaffold is to be erected near an heating, okay. Remember that hard work is not allowed on wooden planks. They are saying it because it becomes a practice. Hard wooden planks, they are not combustible material. It is. So it is not better to be used. It becomes a practice. It becomes a practice, not a good practice. In that case, have to be covered with blanket. And one step further, we can have a metal sheet, above that a blanket. Because with the continual contact on same spot or a little bit more slight, the blanket will bypass or will give way or will burn, in other words. So we must have something else beneath. And only metal sheet we don't prefer because splash will occur. Whenever a scaffold is to be erected near a heat source, if I'm not forgetting, about 75 degree the heat
is considered 75 degrees centigrade. Safety handbook and that one it is, I think, hard surface that will be. Near a heat source such as a heater or process equipment containing hydrocarbon material above its ignition temperature, use of a system scaffold with compatible fabricated metal planks is preferred instead of using a combustible wooden plank. So prefer, so it means should not be, especially in live areas. Okay. The next lift shall be completely installed and braced prior to moving platform units up to the level. Next lift shall be completely installed and braced prior to moving platform units up to the next level. ये question भी है जी. Aramco exam में इस तरह का question भी है. What should be installed after completing a lift? So I think there is a question. So bracing, professional of the field, the people those who have given exam, they refer it to as a bracing. But again, it depends on some of scaffold brace is to be, in some it's not. Anyhow, before we put the means to say we cannot put a platform level till the lift is complete and is made rigid, because the bracing is for rigidity, not to allow them to move. Completely transom, whatever barrier transom, whatever is going to be transoms barrier, definitely we can put it later on, the board barrier. Then we put the pressing, and then we will put the platform unit. Scaffold material shall not be thrown or dropped from height. Definitely, gradually the damage will increase. Heavy material, if they hit something, that's a loss, and they will hit the ground. They are being damaged. Gradually, the damage can lead to incident. So we have safe landings shall be provided at the top of all ladders and at least every 9 meter, okay, of ladder height. Landing shall be close planked and protected by a guardrail system. So landing, this is the preferred way. Here you can see that separate landing is there. If you will go, other than the platform, a separate landing is there. This is preferred way. And then every 9 meters. For example, this is the ladder, it's going above 9 meter of travel distance. 9 meter of travel distance. So 9 meter of travel distance, and we have a landing. Okay. Fully decked, toe board, drop bar. The person will go there. Definitely have to have a little bit pause in the climbing. Again, they will go up and they will go to the next level. So it's not the ladder, it's the 9 meter vertical travel. Okay, I think we will take a short break of about how many? 5 minutes, let us say. And then we will come back, inshallah. Okay, sir, inshallah. Thank you.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let us resume. Hopefully, everyone is back. जी जी सर Okay, so we talked about 9 meter 30 feet, horizontal, vertical travel, and then a landing. If an internal ladder is used, the access opening in a landing or platform through which the ladder pass shall be at least 675 mm, 27 inches, 3 plank. Again, combine most readings are what we call them, most of the access have similar requirement. They are near to each other. Sometimes they are same. So walking working surface, at least 3 plank. Access through a platform, at least 3 plank. Shall be at least 675 mm, 27 inches, 3 plank wide, and not less than uh, 900 mm, 36 inches deep. Because width is same, the transverse side we are talking about. So 3 plank we can call for, while the longitudinal will be 36 inches. So somehow like this it will be. Okay. This longer side 36 inches and the shorter side 27. The person will face this side for climbing. Okay. This side the climbing will be, this will be back. Okay, what else this is? We will look at 2.25 and 27. Access opening through working platform shall be protected by a sturdy guardrail system with a self-dropping, self-closing drop bar at top rail height, or a hinged cover trapdoor may be used. Such cover shall be kept closed at all time except when persons are passing through. Here you can see this is 2.5, 2.6, and the figure 2.7. So both have internal ladders, one is tower static, one is tower mobile. This is what this says, a hinge cover. It can be a timber cover for access all or hinged. It can be you can remove completely, keep aside, go up, bring back, or hinge with वो कब्जे के साथ नहीं होता, movable like a door, वो होगा. ये हमारी इसकी भी रिक्वायरमेंट है और इसकी भी सेकंड ऑप्शन ये इवन इन द क्या कहते हैं इसको सुभान अल्लाह ये वॉक जो लैंडिंग है लैंडिंग में भी हो सकता है और डायरेक्टली इन द प्लेटफॉर्म. Second option, they are saying that we can have a guardrail here. For example, here we can have a separate guardrail with drop bar. So person will go up, will take the drop bar up, and will then come here. Okay. Similarly, here he will come here, and then he will be visible to the or exposed to the platform. So before this section or this section, we can cover with the guardrails. Moving further, if an external ladder is used, a step-through opening in the guardrail system, protected by a self-closing drop bar at top rail height, is preferred, instead of personnel having to climb over or through the guardrails. Over or through, definitely it becomes a stunt. Figure 2.28, the width of step-through opening in guardrail system shall not be less than 27 inches or 675 mm or more than 760 mm 30 inches. So here angular ladder
external, outside, and boundary is there. We have the drop bar here. This distance from here to here, this opening width. Okay, they are referring as the width, or you can say depth, but depth normally we refer to horizontal plane. Okay, the width of step, it should not be less than 27 inches or more than 30 inches. So in between 27 to 30 inches, easily person can pass, because if it is more, definitely in this opening, the guardrail system is compromised. We have these type of, especially with the system scaffolds, we have these type of doors as well. So if the door are there, they are appreciable, more good, are preferred. If not, then the drop bar. Usually with the tube coupler, we use the drop bar, and also system we are using, but it comes with the system as well. Even I have seen some, those they can be fixed. I have seen in pictures, those can be clamped with the tube and coupler. Portable ladder shall not be used on top of scaffold platform. So this is what we are attaching with the platform. Okay? We are attaching with the platform. The same ladder standalone, portable. Okay, it's not only the straight. Even the step ladder we cannot use. Okay? Even the step ladder we cannot use. No ladder, standalone ladder on the platform. When we are giving access to another platform, definitely that is secured, not separate. It become a part of the platform. Entry and exit. Access egress. When scaffold platforms are more than 6, when scaffold platforms are more than 0.6 meter, 2 feet above or below a point of access, portable ladder, hook-on ladder, attachable ladders, stair towers, stairways, ramp, walkways, integral prefabricated scaffold access or direct access from another platform shall be used. Means to say, whenever we are 2 feet from the ground, 2 feet, this distance is 2 feet. From here to here, this distance is 2 feet. Distance is 2 feet. We have to use a means of access, something where we can go for. If we are using ladder, the first step will be at least 12 inches, 1 foot, not more than 1 foot. So we can have first step, then go above. Ladder rung at least 1 foot. If we have to go for any level 2 feet or above. Okay, see chapter 3, landing and step ladder and step ladder, chapter 4, temporary walking working platform. This one we will talk in depth, inshallah. Ladder itself have a lot of things to be considered. A lot of things to be considered in installation of ladder. The maximum horizontal travel distance on a scaffold platform to the nearest exit ladder shall not exceed 15 mm, 50 feet. Once I made a drawing for this one. I will try to share with you if I got that one anywhere, but approximately it was something like that. If here is a person and we have a ladder, and we have a ladder here, we are considering it as a
less wide independent run scaffold, for example. Okay. So this guy either travel here or travel here from the center point, the mid or the between of these two ladders. It should not exceed 15 meter. Okay. 15 meter. In other words, ladder to ladder distance will be maximum 30 meter. Now it's a simple thing to be considered, but remember, with the reference as GI, this distance, 15 meter, is travel distance. Travel distance means that if a person have to travel straight, okay, like in the picture, it's well and good. But what if you have to travel? Then there is an obstruction, you have to go right, left. So that right, left, zigzag, whatever he have to travel will be included. Okay, that will be included. It's not as a straight distance that from ladder, from the person, extreme, where he can go, maximum. If we are at a bigger platform, let us say person can be here at any time. So within 15-meter radius, he must have ladder. If this 15 comes here and we have a ladder, if we take the meter straight line 15, but let us say here is an obstruction. You have to go here, will cross a camel crossing or the crossing over a pipe, will come down and then he will come here. In this case, his travel distance is increased. No, its travel distance to the point of ladder should not be increased. We have to give him ladder somewhere here. So if he have to cross, within 15 meter, he have to find a ladder. It's not just the straight way. Ladder to ladder distance can be 15, and normally at least 2 ladders we prefer to have with the platform. Any question? Is this point clear to you? Yes, may I have a response? हाँ जी, चल रहा है या मैं वैसे ही बैठा हूँ? नहीं सर, चल रहा है, चल रहा है। चल रहा है। नहीं, वो कैमरा भी ऑफ होता है ना, नजर नहीं आता, तो बाज़ औक़ात बंदा जो है ना वो अकेला अकेला फील करने लग जाता है। बहरहाल इस पॉइंट की समझ आई है ना, ये सिर्फ मतलब एक स्ट्रेट डिस्टेंस हम नहीं मेजर करेंगे, ट्रेवल डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर उसको घूम फिर के आना है तो वो घूम फिरना जो है वो काउंट होगा उसके अंदर अंदर। थैंक यू। उसके अंदर अंदर ये जो है वो जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर उसका काउंट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। पूरा हो ना हो, एक्सीड ना हो, ठीक है जी। पूरा हो या ना हो, एक्सीड ना हो। 2-4 दिन पहले किसी ने ये बात की थी, एक सवाल पूछा था कुछ इस तरह के, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मैंने एक्सेस दी हुई है, एक एक्सेस यहाँ पे है, बंदा जहां पे भी खड़ा होगा वो 15 मीटर के अंदर अंदर उसको दोनों एक्सेस पड़ेंगी। लेकिन उनके यहाँ कोई सीनियर साहब है, वो कह रहे हैं नहीं, एक एक्सेस दरमियान में दो। ऐसी बातों का डिमांड आ जाती है, उसके लिए आपको कंसेप्चुअली चीजें समझनी होंगी। अगर कंसेप्चुअली आप समझेंगे तो किसी से बात कर सकते हैं। तो सर जी, जिनके पास स्कैफोल्डिंग का नॉलेज नहीं है ना, वो स्कैफोल्डिंग देख के अपना हिसाब लगा के बताते हैं। हाँ, ये बात तो है सर। अच्छा, मजे की बात, ये जो डिमांड वाली मैं बात कर रहा हूँ, इसका फोल्डिंग के बंदे ने की। एक इसका फोल्डिंग वाले ने, होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको,
क्लाइंट कंट्रैक्टर या कंट्रैक्टर सब कंट्रैक्टर रिलेशन उस तनासर में आके एक बंदे ने दूसरे से डिमांड की सेंटर में एक्सेस दो। सेंटर में एक्सेस देंगे, बर्ड के इसका फोल्ड है, नीचे बंदा जाएगा, लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस आर देयर। तो वो उसके बजाय अगर विद इन 15 मीटर आ रही है एज पे, दैट इज प्रेफर्ड, क्योंकि जैसे ही बंदा ड्रॉप होगा आगे एक्सेस क्लियर है फर्दर मूवमेंट के लिए। अच्छा जी, अगला पॉइंट देखते हैं। द मिनिमम क्लियर हेडरूम अबव स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म एंड लैंडिंग शैल बी 1.8 मीटर। तो हमारी लैंडिंग हो या वर्क प्लेटफॉर्म हो, कोई भी हो, हमारा डिस्टेंस जो है बिटवीन अबव लेवल और लोअर लेवल। अब देखिए ये यहाँ पे अगर लगी हुई हो वो क्या कहते हैं, लिफ्ट, मतलब सिंपल लिफ्ट है, फिर तो डजेंट मैटर वो जितनी क्लोज हो। लेकिन जब ऊपर अनदर वर्किंग प्लेटफॉर्म होगा या रूफ वगैरह होगी, तो उस सूरत में हमें क्लियर हेडरूम जो है वो एटलीस्ट 6 फीट, ये हाइट एटलीस्ट 6 फीट की होनी चाहिए। ये एप्लीकेबल है लैंडिंग वॉकवे, लैंडिंग पे ये है, वर्किंग सरफेस के लिए शायद मिनिमम क्लियर हेडरूम अबाउट स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म्स एंड लैंडिंग फॉर द बोथ, ये कह रहा है, ठीक है जी, 6 फीट फॉर द बोथ एटलीस्ट, चाहे वो वर्क प्लेटफॉर्म है या एक्सेस है या लैंडिंग है। एक्सेस भी बात करो ना, ओनली एक्सेस इंक्लूडिंग दैट। Climbing of scaffold braces, runners, etc. is not permitted except as required by scaffold craftsmen during scaffold erection, alteration and dismantling, but preferred again is a ladder. Once we have, we can say easily second lift, कितनी हो जाती है जी, 6 से 12 फुट ऑलमोस्ट। तो उस पे लेडर लग सकती है और प्रेफर्ड होनी चाहिए। यस, इफ दे गो समवेयर they can, but again maintaining 100% tie up. Stability, a scaffold post and frames shall be erected and maintained vertical and plumb होता है वो प्लम, उसके साथ जो प्लमिंग या वर्टिकल, उसको अमूदी तौर पे देखते हैं स्ट्रेट है, and shall be vertically braced in both direction to prevent swaying and displacement. Plumbness shall be checked using a spirit level plumb bob or spirit level plumb bob, or using vertical lines on a adjacent building. Maybe there is a column which is definitely building columns or so on, they are straight. Beam है कोई, even steel beam type, steel column that is vertical, we can know from that. Vertical lines and on and adjacent buildings or structures. Okay. 2.29 2.30। तो ये हमारे पास है जी पिक्चर 2.29 की, ये आप देख सकते हैं स्पिरिट लेवल लगा हुआ है, प्लम स्टैंड स्पिरिट लेवल लगा के देख लेंगे ये सही है या नहीं है। इसी तरह ये 230 में भी हमारे पास ये मल्टी स्पिरिट लेवल है, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, और ये भी है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली लेवल में, अर्जी लेवल उसका। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। ये आप तस्वीर एक देख सकते हैं, ये आप देखें, अब इसकी प्लमनेस नहीं है, इसमें ठीक ठाक फर्क है, मतलब ये अभी तकरीबन 9 इंच का, 9 का तो नहीं है शायद, गालिबन 12 इंच का होगा। यहाँ लिखा हुआ भी है कुछ 25 cm, ठीक हो गया जी। तो 25 सेंटी के इसमें जो है वो इतना डिफरेंस आ रहा है, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं तो कुछ आधी इंच के लगभग इसमें डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस ऊपर जाके कहाँ तक जाएगा, और फिर इस पे जब लोड आएगा तो फिर लोड के नीचे तो चीज जाहिर है फिर और ज्यादा स्ट्रेस लेगी। तो ये बड़ी जरूरी चीज होती है। हाथों से एक्सपीरियंस से लोग करते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके पास भी ये होता है, ये यूज करते हैं। सुपरवाइजरी स्टाफ को चेक करनी चाहिए ये चीज, फ्रॉम स्टार्ट दे आर गोइंग गुड और नॉट। अगर स्काफोल्ड का एक्सीडेंट बड़ा खतरनाक होगा, खुदा न वास्ता कोई एक चीज कैपेसिटी लूज कर गई है, ब्रेक हो गई है, तो सारी स्काफोल्ड एकदम जो है वो
ओवरलोड आ जाएगी। एक एक कंपोनेंट जैसे जैसे टूटता जाएगा बस। वो किसी ने कहा था कि ब्रेक आवाज आती होती है, बस फिर सारी इकट्ठी आ जाती है, अल्लाह माफ करे। क्रिटिकल इट इज। ओके जी। Stability, where uplift or tension loads may occur in a post, standard, or frames, such as the backside of cantilever scaffold. The post or frame shall be locked together by pins, not joint pins, bolted or pin speared. End-to-end sleeve coupler or equivalent means capable of carrying the tension load. ये जैसे हमारा कंटिलीवर है, तो इसकी अगर एज पे की हम बात करें तो डेफिनेटली एज पे जो है, अगर इसको हम एज कंसिडर करते हैं तो अपलिफ्ट आएगी। आगे से डाउन होगा तो पीछे से उठेगा उठेगा, ये अपलिफ्ट इफेक्ट हो, या अगर उस पे आ रहा है स्ट्रेस लोड, स्ट्रेस हमारा कुछ ज्यादा हो गया, अगर इस तरह स्ट्रेस लोड आ रहा है, अपवर्ड में जाएगा, यहाँ से ये चीज फिक्स है, या लेटर से यहाँ से डाउनवर्ड लोड आ रहा है, यहाँ से अपवर्ड, तो उसी सूरत में हमें क्या नहीं यूज करना, जॉइंट पेन जो हमने देखा था कि जिसका टेंशन लोड नहीं है, वो जॉइंट पेन यूज नहीं करेंगे हम। बोल्टेड स्पीकर्स होती है, आगे हम देख लेंगे इसकी पिक्चर। ये आमतौर पे उसमें सिस्टम स्काफोल्ड में पड़ती है एक स्पीकर, और फिर इसमें होल होते हैं, दोनों स्टैंडर्ड से में डाल देंगे हम, और स्टैंडर्ड के बाहर जो होल होगा उसमें से ये बोल्टेड पेन डाल देंगे, बोल्टेड पेन डाल देंगे ताकि वो अपलिफ्ट में इसको पकड़ ले। और एंड टू एंड कपलर या स्लीव कपलर भी जो है वो हमने उसको भी देखा कि उसकी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अपलिफ्ट के अगेंस्ट वो भी काम करेगा। ओके जी, फिर हमारे पास आ जाता है जी नॉन मूवेबल सपोर्टेड स्काफोल्ड विद ए हाइट टू द नॉन मूवेबल सपोर्टेड स्काफोल्ड स्टैटिक with a height to the uppermost planked level that is more than 4 times the minimum base dimension, that is more than 4:1 height to width ratio, shall be restrained from tripping by ties, outriggers, frames, or equivalent members. Equivalent means upper sections of a stepped scaffold shall not have a height more than 4 times the width of the scaffold at the base of that section unless tied and properly installed to ensure stability। पहली चीज हम देखते हैं जी 4:1 विड्थ रेशो क्या आ जाती है जी। ये हमारी आ गई 4:1 विड्थ रेशो। तो ये कहता है जी ये जितनी स्काफोल्ड हाइट में जाएगी, इसके हिसाब से इसकी विड्थ, यानी अगर हाइट 4 मीटर है तो एटलीस्ट 1 मीटर की उसकी विड्थ होगी। ठीक है जी, विड्थ बेस की, ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, जो भी हम साइड देंगे उनमें जो छोटी साइड होगी उसकी मेजरमेंट करेंगे। नॉर्मली हमारे पास ट्रांसवर्स जो है वो छोटी होती है, यानी ये स्काफोल्ड अगर इस तरह लंबी लगी हुई है, लंबी है स्काफोल्ड, तो लंबाई बेशक इसकी ज्यादा हो, इसकी ट्रांसवर्स साइड जो है उसकी मेजरमेंट लेंगे। अगर ये टावर है तो इन केस अगर इसकी लॉन्गिट्यूडनल साइड छोटी है और ट्रांसवर्स साइड लेट अस से ये 1.2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो स्मॉलर डायमेंशन जो होगी वो हम लेंगे। तो ये जी उसको मल्टीप्लाई बाय 4, इतनी हाइट लेस देन दैट हो। इफ इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज तो हम इस तरह स्टेप दे रहे हैं। अब देखें हमने यहाँ पे स्टेप दे दिए, नाउ हियर इज अ स्टेप, सो नाउ दिस बेस into this will be calculated up to this point, it will be calculated with this base. Now above this point will be calculated with this base. Again above this point where we made a step, जहाँ पे हमने एक स्टेप बनाया, इससे ऊपर का सेक्शन, again it should not be 4:1, it should not cross 4:1 ratio। ठीक है जी, यहाँ पे अगर इसकी 1 मीटर है तो ये फिर 4 मीटर से ऊपर नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो फिर हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। लेकिन अगेन वी हैव टू कंसिडर इट शुड नॉट बी
more than this 1 into 4. If we are going above, then we have to increase the base more, okay, in the smaller direction. तो ये इसका एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये होती है। इसके लिए आप एक आध मिनट देख लें, अगर कोई आपके जहन में सवाल आता है तो। ठीक है जी, क्लियर है, वी कैन प्रोसीड। यस सर। Okay, thank you. Let us move further. Hello, sir. Can you hear me? Yes, Mr. Said. सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर 1.8 से अबाव जो वर्क एट हाइट होगा उसके लिए हमें जो फॉल प्रोटेक्शन यूज करने होते हैं, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं 1.8 पे और हम हार्नेस यूज कर रहे हैं, तो हार्नेस की लंबाई कितनी होगी सर? वो हमें प्रोटेक्ट करेगा या हार्नेस भी तो लंबा होता है? अगर हम फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे हार्नेस यूज कर लें तो हम अगर कोई बंदा अगर गिरे तो नहीं पहुंचेगा जमीन पे? आप बंदे को बोले थोड़ी देर इंतजार कर ले, हमने अगला सेशन इसी पे करना है। वो अच्छा। कमर्शियल जो सिस्टम होता है ना हमारा, उसमें मेरे साथ इत्तेफाकन हुआ, उन्होंने कहा यू आर गुड इन अदर थिंग्स बट ये आपकी एक वीकनेस है कि आप आगे का वो नहीं कर रहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट आवर सेशन इंशाल्लाह विल बी ऑन फॉल प्रोटेक्शन इन लास्ट डेट्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। बहरहाल सिंपली ये है कि हार्नेस को क्लियरेंस चाहिए। आरामको 18 फुट कहता है, और आंसी की जो हार्नेस Z359.1 की होती है, वो आंसी स्टैंडर्ड के हिसाब से 18.5 फुट, 18.5 फीट फ्रॉम लोअर लेवल उसको हम हुक करेंगे, तो तब हम यूज कर सकते हैं। वरना पहले प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर रहे हैं और आपने हुक की हुई है, तो उसकी एक ही कंडीशन है कि बिल्कुल यूं टाइट है, और आप बस यूं चल फिर रहे हैं, नीचे नहीं हो सकते। अगर आप नीचे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर वो, अगर आप गिरेंगे तो आपको नहीं बचाएगी, आप ग्राउंड पे लगेंगे। ये तो जो हमारी स्टैंडर्ड हार्नेस है उसके हिसाब से हो जाता है। और फिर जहाँ ये ठीक है। जरूरी हो, उसके लिए फिर हम रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन्स भी यूज करते हैं, या उसके लिए फिर हम रिट्रैक्टिंग ये लैंड यार्ड यूज करते हैं। रिट्रैक्टिंग लैंड लाइफ लाइन जो होती है वो 2 फुट के अंदर अंदर आदमी को पकड़ लेती है। सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन, या इनर्शिया रील, यो रील भी कह देते हैं उसको। या फिर हमारी जो लैंड यार्ड होती है वो रिट्रैक्टिंग होती है। वो रिट्रैक्टिंग 5-6 इंच के अंदर अंदर बंदे को रोक लेती है। तो फिर अगर शॉक अब्जर्वर खुलेगा भी, तो बंदा 2-3 फुट, 3-3.5 फुट ये आंसी का खुल जाता है, नीचे जाएगा, और टोटल 4-5 फुट में, एक आध फुट स्ट्रेच लग के 4-5 फुट में रुक जाएगा। लेकिन डेफिनेटली उसके लिए वो मैकेनिज्म होगा। आम जो हम हार्नेस ये 1.8 मीटर वाली लैंड यार्ड यूज करते हैं, और उसके साथ हमारी ये हमारा शॉक अब्जर्वर होता है, नहीं, उसके लिए कितनी क्लियरेंस हो जाएगी? जहां आप खड़े हैं वर्किंग लेवल, ठीक है, आप 8 फुट पे तो ऊपर, 18 फुट पे तो कर रहे हैं, लेकिन इजी काम करने के लिए आप उसको बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं लगा सकते ना, कि हर वक्त यूं बस वो सीधी लटकती रहे। तो जहां आप खड़े हैं वहां से नीचे, अगर वहां से ही वो काम शुरू कर देती है, इतनी हाइट पे है कि जैसे ही आप प्लेटफॉर्म से नीचे हो रहे हैं, हार्नेस ने काम शुरू कर दिया, आपका फॉल, फ्री फॉल यही को 2-4-6 इंच में खत्म हो गया है, तो फिर भी आपको तकरीबन 6 फुट एक हो गया, 3 फुट आपकी डिसलरेशन होगी, 3.5 फुट, 3 फुट क्लियरेंस, 6-6 12-13 फुट आपको उससे नीचे भी चाहिए, प्लेटफॉर्म से नीचे। यानी प्लेटफॉर्म ओके। से जैसे ही आपके पाँव नीचे हुए, आपकी हार्नेस ने काम शुरू कर दिया। इसके बावजूद प्लेटफॉर्म से नीचे 12 फुट जगह चाहिए होती है। ये पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन होती है सेफ्टी की। जैसे H2S डिटेक्टर 5 फुट की हाइट पे ले जाके रख दिया पिंजरे में, ठीक है, या बंदे को पहले प्लेटफॉर्म पे हुक लगा के, कहा बस हुक लगा के काम करते रहो। ये पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन होती है, इन्हीं वजह से अक्सर हमें साइड पे इश्यूज आते हैं, या कंप्लाइंस में इश्यूज आते हैं। ओके सर।
ठीक है Thank you. जनाब, ओके ठीक है जी, सर। okay, so let us move further. Stability ties shall be installed as following. Ties shall be connected to building or structure which are capable of supporting the applied unfactored, whatever we consider. We are not multiplying this, that unfactored load by connecting a tie tube to at least two members, two posts, or to standard or horizontal member runner, and coupling this to a two-way tie, 3-2-2, column box tie, 2-3, rival tie, 2-3-4, or an equivalent connection, okay, 2-3-5. So they will come, I think, further, but this is what a two-way tie is, or through tie. So here you can see one, okay, one tube is here, one tube is here, and then we have uh, these tie tubes going to scaffold member. दो पोस्ट को या दो रनर को दोनों जो है वो कनेक्ट हो जाएंगी, मतलब दो हो सकता है जाके पोस्ट के साथ हो जाए, दो दूसरी दो जो है वो रनर के साथ हो जाए, डजेंट मैटर, बट एक ट्यूब एटलीस्ट दो मेंबर्स के साथ कनेक्ट होगी। अगला हमारे पास आ जाएगा जी बॉक्स टाई है जी, कोई कॉलम होगा, उसके चारों तरफ आ गई ये हमारे, ये बॉक्स आ गया और ये हमारी टाइस का फोल्ड के साथ चलेगी, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। देन दिस इज रिवल टाई, और रिवल टाई इट इज। सो ये एक जैक होता है जी, जैक है, इसके साथ टाई को टाइट कर दिया जाता है, अगेन टू ट्यूब्स गोइंग टू टू मेंबर्स। फिर हमारे पास आ गई जी एक इंटरमैक्स, यहाँ पे हमारे पास आ गया, आप देख लें ये 3-5 जो है इक्वलेंट कह रहे हैं वो, तो यहाँ पे हमारे पास वन इज बॉक्स टाई, ये हमारी बॉक्स टाई आ गई और ये हमारी रिवल टाई आ गई। तो कोई भी इस तरह की स्ट्रक्चर जो जो हमने कहा था 1:4, 1:4 विड्थ से कम होगी, अदरवाइज हैव टू बी टाइड विद ए स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग any unfactored load, applied load of scaffold. Definitely, scaffold have its loads on the ground, but any type of movement we can expect. So ये हमारी टाइज होगी जी। इसके अलावा हमारे पास और टाइज भी होती हैं, बुट टाई है, लिप टाई है, जे टाई है, दे आर फ्रॉम European standard or the British standard, we can say. But in practical, we sometimes use them. In practical or on ground, sometimes we use them. Continuity आ गई है हमारे पास, दी की tie shall be installed according to the scaffold manufacturer recommendation. Okay, the tie connections shall be made with right angle coupler. That's one of the important point. All couplers and the tie tubing will be what we called it, double coupler or load bearing coupler. Tie tube shall be installed at locations where runner, ledger, and barrier transom support the post standard in both direction. Tie tube shall be connected to post as close as possible to the horizontal member, or connected to horizontal member as close as possible to the post. Wherever we are going to put the ties, अब definitely यहाँ दो ties लगी हुई है बॉक्स पे, तो दोनों के लिए from both tube it's not possible, but where possible we keep the connection near to the, if we are attaching with horizontal member, we keep it near to the post. If we are attaching to the post, we keep it near to the horizontal member ledger. Okay? So vertical है, यहाँ पे हमारा लेजर आ रहा है तो हमारी कोशिश है कि इसके करीब लगाएं, लेजर के साथ लगा रहे हैं तो कोशिश है कि पोस्ट के करीब जाए, ये हमें इसमें देखना होता है। Tie shall be installed adjacent to transverse vertical braces. थोड़ा सा 5-7 मिनट मेरा ख्याल है चलते हैं, हमारा ये सेक्शन पूरा हो जाए। 258 258 है, कितना लंबा है मुझे तो भूल ही है। 258, लेट मी सी, अगर ज्यादा लंबा है तो फिर हम छोड़ देते हैं, अदरवाइज 258।
नहीं, काफी सारे पॉइंट आ जाएंगे इसमें, काफी सारे पॉइंट है अप टू एल. सो आई थिंक वी विल कीप it for tomorrow. Tomorrow, 259, 258. Okay, we will keep it for tomorrow remaining because a lot of things and it's not better just to pass them. Okay, everyone. Okay, sir. Okay, sir. Okay, so in that case, we are going to close our session here. Thank you for your participation. Thank you for your patience. We'll see you Thank tomorrow, you. inshallah, for streaming or the start of the class 8:30, but we'll prefer if you can come earlier for exam at 8:15. Okay. Okay. Thank you once again. Have a Okay, nice sir. time. Thank We'll Thank see you. you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum assalam.